Yes, okay. So before starting the topic as well as the experiment, I would like to uh, show you our syllabus once again. So as we know, we have got the DevOps and as well as advanced DevOps in only one semester, right? So if you look at now the syllabus, I have cut short it and one second. Yes, I have separated that the syllabus. Yes, now we are having only DevOps and advanced DevOps. So if you look at this only DevOps syllabus, then you can see you can go through the six modules over here, like introduction to DevOps, then version control, then Jenkins, then Selenium, and then Docker, and then Puppet. So these are the six modules that we are going to cover it. And if you look at the practical list of the practical, then you can see there are total 12 practicals, and out of these 12 practicals, right, we have completed first three. Okay, DevOps and DevOps, then version control system and Git. Okay, so these three list practicals we did it, and now we jump to the Docker, right? We jump to the Docker, right? Because we must know what is the life cycle of Docker, the container, and so on and so forth. After this thing, we are going to jump with the Jenkins. Okay, and this is how we are proceeding further. So 8 and 9 practical will be our fourth and fifth experiment, right? So look at this very carefully, that first three experiments are as it is, then 8 and 9 will be our fourth and fifth experiment, and then we add the Jenkins and so on and so forth, right? So today and tomorrow we are going to complete this Docker, these two experiments, as well as we are going to complete the assignment based on this, and the quiz based on this, right? So the quiz we have to take, right, and the assignment as well. Okay, so this is the DevOps, and if you look at the advanced DevOps, then you will come to know that the list of practicals and the contents, it is actually advanced DevOps, right? Means so you can go through the list of practicals over here, 1 to 12 practicals, right? So the Docker, Jenkins, and whatever we are doing, right? So it is in DevOps, right? Labs, whereas in advanced DevOps, what you are having is this, like cloud infrastructure, cloud collaboration, demonstration. Then then you have got AWS code build, then the Kubernetes, and then so on and so forth. Kubernetes से दो तीन practical है, then you have got the right digital ocean and all these practicals. Then जेनकिंस है इधर, लेकिन उसका एडवांस है. देन यू आर गॉट सोनर क्यूब, एंड देन nagios, like that. Okay, and last one is the lambda function, and so on and so forth. So this is the list of practicals in advanced DevOps. In DevOps labs, whatever I have shown you, these are the list of practicals, right? You stick with it. So even though you are doing Docker experiment and everything in your advanced DevOps, one second, huh? One second.
Yes, students. Okay. So first of all, in your mind, please fix that what type of things you have to do it in DevOps and what type of things you have to do it in advanced DevOps, right? And even though you are doing the same thing, like Docker, whatever you are doing it in advanced DevOps, it is not going to fulfill the requirement of your advanced DevOps, right? So there are two trains. One is of DevOps and another one is of advanced DevOps, right? So इधर से भी हम लोग को वी हैव टू अचीव द गोल एंड एडवांस डेवलप का भी आपको गोल अचीव करने का है, लेकिन दोनों मिक्स मत करो, राइट? सो that is what the first thing I would like to tell you, because last time जो ये था like Insha told old कि सर हम लोग का उसमें ऑलरेडी हम लोग ने डॉकर एंड दिस थिंग दैट वी डिड इट एंड सो एंड सो फोर्थ. आपने किया बात अच्छा है, लेकिन उसका कुछ आपको लेना देना कुछ नहीं है. नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू सबमिट द एक्सपेरिमेंट ऑफ डेवॉप इन एडवांस डेवॉप. आर यू गेटिंग इट? तो ये अलग है, ये गाड़ी अलग है, ये गाड़ी अलग है, दोनों का गोल एक ही है, वो बात अलग है. But you can just see, right, the list of experiments in DevOps and the list of experiments in advanced DevOps, right? तो इसके लिए मैं ये जो syllabus है, I separate it, okay, and after that no subject other syllabus, and first of all I have just put all these things, marking scheme and so forth, right? So this the doc file consists of only two subject syllabus, DevOps and advanced DevOps, right? That I will create a PDF file and I will give it to you so that you people can see, go through the list of contents कि इसमें क्या क्या है, राइट? इसमें क्या क्या दिया है, राइट? और इसमें कौन सा चैप्टर्स है वो भी इधर मेंशन है ना. टोटल इट इज गिवन, इसमें सब मेंशन है कि क्या क्या है. इट स्टार्ट्स विद योर क्लाउड ओनली, राइट? कोड स्टार एंड एवरीथिंग, राइट? एंड देन क्यूबरनेटिक्स एंड लाइक दैट. तो इसमें आपको डॉकर का, मैं वही बोल रहा हूँ डॉकर का एक्सपेरिमेंट किया तो बात अलग है, लेकिन इसमें कुछ सबमिशन कुछ नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू डॉकर, because nothing is given over here, right? It is given in DevOps. Okay, so दोनों को ऐसा मिक्स मत करो, right? Okay, दोनों सब्जेक्ट ही एक ही है, लेकिन do not mix these experiments with that experiments with this. Okay, तो थोड़ा सा माइंडसेट अपना फिक्स करो कि भाई ये क्या है, मैं क्या सीख रहा हूँ, ये कौन से सिलेबस में है, उसका मुझे कौन सा एक्सपेरिमेंट सबमिट करने का है. इसके लिए मैं हमेशा whatever I am giving you the assignments and everything, I will stick with the syllabus. सिलेबस में जो दिया है ना उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, राइट? फाइन. सो दिस इज नंबर वन थिंग. सिलेबस का कंसेप्ट मुझे लगता है वो कंफ्यूजन इट मे बी देयर इन योर माइंड और इट मे नॉट बी देयर, आई एम नॉट नोइंग, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको, राइट? सो just keep it in mind what we are going to do it and how we are going to do it. Okay, number 1 point. Number 2 point is that I have created the list of practicals and so on and so forth. It is like this. So I open my ERP so that I will tell you what are the deadlines and everything, so that no students will miss anything like that now onwards, right? And even though there are so many major problems like the ERP problems and so on and so forth, okay, again I will extend the date and we will finalize and everything that we will do it. But still दो दिन दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अभी किया है और 3 बजे कंप्लीट करने का है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, नेटवर्क प्रॉब्लम, राइट? ऐसा वैसा वाटर प्रॉब्लम्स आर देयर. सी 4th and 5th assignment, sorry, not assignment, sorry, but it is a practical experiment. So this is the experiments 4th and 5th, what we are going to do it today and tomorrow, right? So if you follow me, then I think you will not miss the deadline at all, and I have kept the deadline at 19th August. So आज है, कल है, परसों, राइट? सो 19 अगस्त अप टू 6 PM, राइट? सो आपको 4th एक्सपेरिमेंट एंड 5th एक्सपेरिमेंट आपको सबमिट करने का है, राइट? विथ PDF फाइल. और क्या करने है क्या नहीं करने का है, आई एम गोइंग टू कवर, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, बिकॉज बट आई हैव फिक्स विद इट. ओके, 4th and 5th, this is number 1. Number 2 is quiz. I have assigned the quiz to you, right? Quiz number 2 I have assigned it to you, right? And uska bhi deadline tomorrow, right? By tomorrow in the evening, or I'd say I think it's at up to 8 o'clock. You can check your ERP. 8 बजे तक आपको सबमिट करने का, तो यू गॉट lot of time, right? 24 hours is the time to submit your quiz to.
and assignment also. This is assignment number 2 and you can just see आज का डेट का मैंने स्टार्टिंग डेट डाला है, राइट, एंड 24th अगस्त. अगेन यू हैव गॉट 1 week टाइम, राइट. आराम के साथ बैठ के सोच समझ के असाइनमेंट ले सकते हो. आज अपलोड करो नहीं हुआ, कल अपलोड करो नहीं हुआ, परसों अपलोड करो नहीं हुआ, ऐसा 6 दिन करते रहो. और उसमें बावजूद भी नहीं हुआ तो मैं और डेट एक्शन करने वाला हूँ. सो दैट इज ऑल्सो द फीचर गिवन बाय मी, राइट. सो ऐसा है, राइट. सो आई थिंक अभी आपको you have got the habit also to work with like this, right, ERP, so on and so forth. And I talk with your class in charge also, Madhvi madam also, right. And I also told her, that please make sure that all the faculties, they are going to give you assignments, and this is a regular assessment. हम लोग रेगुलर जो हम लोग पढ़ाते हैं वो आपको रेगुलर असेसमेंट दे रहे हैं क्या, और रेगुलर चेकिंग भी हो रहा है क्या. दिस इज लाइक what we have to show with this kind of work. That is only the thing, right. क्योंकि लास्ट टाइम तक हम लोग ऐसा कर रहे हैं, you do whatever you want to, at the end of the semester everything you submit at one time, और dates आप पीछे का डालो और पूरा सबमिट करो. So this is what we used to do, but this is not going to be there right from this semester. Okay, so इसके लिए it is from the college it has been asked to us to please follow ERP. Okay, now I'm not knowing about the other faculties also what they are doing, whether they have given you assignments, quiz and practicals, and they are taking your submission as well or no, right. But I'm following that particular rule. Okay, so this is the second point I would like to tell you. Now the third point is actually our practical. Now let's start with our practical. Okay, and I hope if you are having the laptop, okay, or computer with you, if you follow me, right, I think your fourth experiment will get over today, by today itself, right. And fifth one in the tomorrow morning it will get over, right. So I am opening my fourth experiment, and this is what I have put it over there also in ERP also, right. So क्या क्या करना है, right. So the aim is to understand the Docker architecture and container lifecycle, install Docker and execute Docker commands to manage images and interact with containers. So this is our problem statement, right. While talking with the Docker architecture and container lifecycle, right, I have taught you what is that, right, by theoretical point of view. From theory point of view, I already showed you the the Docker architecture and the container, how the Docker and the microservices they are going to work. Okay, and how the second type of architecture. So there are the architectures, like the difference between the two types of architectures, everything we have discussed. Okay, so that thing I will not discuss, right. Today we will do only the practical, right. But from my suggestion is that if you are having this particular so from my side what I will give you, from my side I will give you this particular PPT as well, right. So that you people will have the notes, whatever I have covered, everything that I will give it to you. So ये मैं आपको अपने ग्रुप में बाद में डालता हूँ, right. So whatever I have covered, the challenges, the Docker, how the system works, how the Docker eliminates the matrix of from hell. See this microservices architecture, and the monolithic architecture, how they are both are different. Okay, then the advantages of microservices architecture, the containerization is what, and the virtual machine versus containers, right. So this thing we have covered. On the same line, I have asked the question, right. So the same thing is over to understand this. So if you say that I understood Docker architecture and container lifecycle, that means you understood all these points. Okay. Now number 2 is what we are talking about, the installation of Docker and everything, right. So I have written all the steps over here. So let's follow me one by one. So let's create AWS account by just paying ₹2, and this what I expect, or what I was expecting, that many of you did with this. You have created your account, right. So I will also open the account. This is my account. I also paid only ₹2, right, and this is for the whole year. I can do all the experiments of DevOps as well as advanced DevOps with this ₹2. That is what is the the syllabus what we are having.
सो एक्चुअली आपको ये जो हमारा AWS अकाउंट है, इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर बोथ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. So please you also follow me. Right, I am having my password. So for time being, I will just stop my presentation and I am entering into the AWS. Please you also do it. Yes, Divya, can you able to see the screen? Yes, sir. Okay, so now I am in. So I think you are also in with your account. Okay. So I'm hoping that you are following me, right? Insha, you are there? Yes, sir. I just signed in. Okay, okay. So now you will have this the the dashboard where you can see the at the top there are services, right? So out of these services we are going to select the EC2, right, where with the help of which we are going to install the virtual server. So you can click on EC2. See, I have written here this thing, in detail, all the steps, right? So that even though if you just read it, one by one, still also you will get the results. So as I'm telling follow the screen, it will appear. Then you click on the services, click on EC2, like that. So all these things that I'm just showing you, it is written over there, and you also please see this. And now if you are uh, watching this particular EC2 dashboard, Insha, can you able to see this? Yes, sir. Okay, okay. Please follow me. Follow me. So whatever I'm asking, you please give me the answer so that I will come to know, right? Even though one student is answering, so that the idea will get clear to all of you also, right? So you can see instances running. So now the instances is running one, right? So what I did, I already launched one of the instances, right? From your side you may get 0, or if you did previously, right, then you may having 1 or 2, right? Insha, what you can see over here, Sir, it is one. it is 1, right? So now let's launch instances. Okay, you will get this particular screen. Here we have to launch the services as they are free tier eligible, right? So whatever free tier eligible services are available, only that services you can able to, right, install. Other services also you can able to install it, but it will charge, right? So that's why it is very important to understand this fact, that what type of services,
right? What type of services you are going to install. So you can see here, right from Ubuntu, right? Then Linux to Amazon Linux to, right? Then Ubuntu 18.04. So this was with 16.04. This is 18.04, right? Can you tell me, Insha, what is this 18.04? Sir, it is version. वर्जन यानी उसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of 18 and what is the meaning of 04? The meaning is this Ubuntu launch in 2018 and the month is, right, April, January, February, March, April. So that is the version what Ubuntu came, right? Ubuntu ka I was few years back I was a promoter for Ubuntu. That's why I'm knowing it, right? What is this? And it is clear cut written in our GNU public license. GNU public license में clearly लिखा है, right? What 18 represents, what 04 represents, like that. So it is it is launched in 2018 and the month is 04. That's why the version is 18.04. This is the actual case. What we will do, right, instead of going through the windows and other things, Debian and this thing, here we have got this thing also, 20.04. Correct, Insha? Yes, sir. So this is again the latest one. 2020 में अभी लॉन्च हो गया और 04 यानी अप्रैल में लॉन्च हो गया. So right, so उसके अलावा तो है ही नहीं. So I think this is the latest version, correct, Insha, of Ubuntu. So what Yes, we will sir. do, we will put this, okay? So our 64 bit. So select करो. Select करो. And now you will come to know that how many instances, how many CPUs, how many things is GBs and instance storage what we required, right? So here all these things are given to us. What we will by default it is being selected, that's T2 micro, right? So this is the free usage tier, right? So यही हम लोग को लेने का है. It is the free usage tier, right? So already default इधर लिखा ही है. Okay, so let's keep it as it is. Now you can see configure instance details, right? Insha, you are following? Yes, sir, I am with you. Okay, so click on instance configuration, right? तो इधर मैंने मेरे पीपीट इधर इसमें भी मैंने सेम किया है. So same thing I will tell you what you are going to do it, right? So we have selected the free instances and now we are configuring with the instance details. So you can see number of instances 1. So let it be 1 as it is. So we are not going to change anything over here. Just we will go for what? The add storage. Okay, so just click on add storage. Here also we have got the facility, we have got the root type is root, the size is 8 GB. Okay, so here also we will not do anything, we will go for the add tags. Okay, so you can see it over here, right? Add tags. So go to the add tags, and here also we will not do any modification, and we will go for the next tag. Configure security group. Here you are having now, ये आपका security group आ गया. Now here some changes we would like to do it. Okay, the changes I will tell you. Okay, so what we are going to do, see first security group, जो अपना security group है उसका हम लोग नाम चेंज करेंगे. तो over here the security group का नाम है launch wizard 1. So instead of that we will have like this. I have written it over here, reset T, जो मैंने मेरे हिसाब से मैंने हिसाब से ट्राई किया था. You can put like this. I will write here reset -devops. आप reset_T लिखो, whatever it is, please do it. And now this thing we have to add the rules over here. तो इधर अभी हम लोग को rules add करने का है one by one. Okay, so like add rule, we are going to add HTTP, right?
So HTTP rule हम लोग ऐड करने का. How you are going to do it? Let's say add rule. Here you can see. Here you are going to add HTTP. So this rule we are going to add it, and it will open at port number 80, and the source is anywhere. Now why anywhere? Because whatever IP address that it is going to give me, right? Anybody from your point of view, you can able to access that particular port, access that particular web applications, right? हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये जब भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे डॉकर, उसके बाद में आगे जाके हम लोग इसके ऊपर अपना वेब एप्स डिप्लॉय करेंगे, और ये जो डिप्लॉय किया हुआ जो वेब एप्स है और वेब पेज है, so other peoples can able to use it. So that's why I'm telling that it is anywhere. And one more add rule that we are going to do it, that is HTTPS, that is for security layer. So ये भी हम लोग ऐड करेंगे, HTTPS, and it is going to open at 443, and this also we will do it at anywhere, right? So these three rules we are going to add it. ये तीन rule करो. Insha? Yes, sir. Done. Okay. Now here we have got review and launch. That is the next one. You can just check, right? You can just check whatever you are needing. So free tire, E2 micro instance type हम लोग ने select किया था. The security, security group is this. Then here we have got this thing, HTTP and this thing, storage details and so forth, right? So if you can see this, then you can click on what? No, one second. इसके बाद में review and launch, and सर वो लॉन्च करने के बाद आएगा ऑप्शन. key pair ना? Yes. Yes. Now this key pair, see, I already have this key pair, right? So नया key pair बनाते हैं, new key pair, okay? And here I will write now visit DevOps, right? Visit DevOps, and this key pair that we are going to download it. ये हम लोग को download करने का है. This is correct, Insha? Hello? Yes, sir. Okay. So let's do it. Okay, मैं AWS के अंदर ही इधर ही बनाता हूँ. Okay, जैसे पहले मेरा TPM था, इधर अभी DevOps PM हो गया. So I have downloaded it. This is very important to download it. Okay, and the next thing is what? Yes, save it in repository folder and just launch instances. Click on launch instances. Now your instances are now launching. Okay, is it correct up to this much? Yes, sir. सर तुम्ही कीपॅड कसं डाउनलोड केलं? कीपॅडला बघ, कीपॅडला काय होतं, कीपॅडला ना मी लॉन्चला क्लिक केलं ना, बटनला लॉन्चला क्लिक केलं ना की तो मला कीपॅड सिलेक्ट करायला सांगतो, बरोबर? हॅलो दिव्या? हा येस. कीपॅड तर एकदाच बनवायचं ना? एकच बनवायचे. ते दिव्याचं ऑलरेडी राहिलं एकदा ऍडव्हान्स दिवस मध्ये बनवली होती. हा बनवलेली ना, पण अजून एक बनवून ठेव ना, वेगळी बनव ना, नाव वेगळं ठेव ना, परत क्लॅश नको व्हायला. अच्छा, ओके, ठीक आहे. नाही पण ती पण वापरू शकतो ना, म्हणजे वापरू शकतो, पण नंतर पुढे जाऊन आपल्याला डॉकर आणि याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम नको व्हायला ना, आता एक वेगळीच चेनच वेगळी बनवू ना आपण. असं ठीक आहे सर, बरोबर. आपण एकदा हे बनवूया, त्याच्यानंतर आपण ट्रायल अँड एरर नंतर करू ना परत, है ना? ओके सर. एकदा आपण पूर्णपणे संपूर्ण सायकल बघूया की कसं बरोबर होते का नाही. ते एकदा झालं ना, देन वी कॅन हॅव द ट्रायल अँड एरर. हे झालं का दिव्या? सर एक सेकंड परत सांगणार का, जरा मी कन्फ्यूज झाले. तू लॉन्च बटनला क्लिक केलं का? नाही सर. कर ना. तुझी स्क्रीन शेअर करते का, म्हणजे कळेल. हॅलो हा सर, झालं. की न्यू की पेअर सिलेक्ट कर. एक्झिस्टिंग पेअर नको सिलेक्ट करू, न्यू की पेअर कर. हा सर. न्यू की पेअरला नाव दे. जसं मी नाव हे दिलं ना, विसेट,
आणि लगेच क्लिक नको करू, ते डाउनलोड करायचं पहिले. जसं मी इकडे फोल्डर बनवलाय आणि हे बघ हे विसेट हायफन डेव्हऑप्स डॉट पीईएम, तो पीईएम फाईल तयार होते. हा सर झाली. ती डाउनलोड केली, पहिले डाउनलोड करायची, हो दॅट इज सर व्हेरी केली इम्पॉर्टंट. download. ओके, आणि मग आता लॉन्च बोल ना. हा हा हा, लॉन्च बोलो तो लॉन्च झालं. ओके, लेट्स गो हेड विथ दिस. ओके, नाउ वन्स यू डिड इट, ओके, सो वी आर गोइंग टू राईट डाऊन द इन्स्टान्स नेम फॉर इट. ओके, इन्स्टान्स नेम आपल्याला बघायचं आहे. जसं व्ह्यू इन्स्टान्सेस मध्ये क्लिक करा, go in view instances and you can see, you know, like I have tried from my side, so I have given the name Docker machine, right? So here जो अभी आपने नया बनाया रहेगा, right, whatever you have created the new, right, instances, here we are going to write down the new name. So here I will say Docker new machine, anything, you know, already आपने नाम दिया रहेगा तो अलग नाम दे दो, it is up to you. I think हाइफन के बजाय ना, ये सॉरी अंडरस्कोर के बजाय हाइफन दे दो, अंडरस्कोर, राइट. सी, तो ये देखो मेरा इंस्टांसेस क्रिएट हो गया है, राइट. हे झालं इथपर्यंत. दिव्या, हा सर. इंशा हो गया तेरा? Yes, sir. Okay, now see, now this has been selected now, so there are some IP addresses are given, right. ये हम लोग का IP addresses बहुत काम में आने वाला है. So कैसे, जैसे अभी ये now this is public IP address, this is public IP address. So this public address we are going to use it to deploy or to upload or let's say deploy our web application. तो ये IP address हम लोग का उधर काम में आने वाला है. Now how you are going to stick with the you know, our bash system? So there is one more DNS IP address, that is this EC2. ये EC2 instance का IP address है, ये IP address है, and this is a private IP address. So ये तीन addresses हम लोग को important है. उसमें से two IP addresses that we are going to use it with the help of which we are going to connect with this instance. AWS का instance को connect करने का है मुझे as a developer. So I will use this DNS. Whereas the public means the overall all the people, they are going to access my the actually website by using this IP address, right? तो हम लोग हमारे system पे, so what I am going to do now, once I will install the Docker, after that I am going to install the container. I am going to open the container, and that container is going to interact with this DNS. और ये DNS किसका है? AWS का. So उसके लिए up to this much it is okay, correct? दिव्या, it is okay? इंशा? येस सर. Okay, so Yes. ये हम लोगों ने इंस्टेंसेस क्रिएट किया, नाम भी बदल दिया. Now for SSH using, what I am going to use is a MobaXterm. ये सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करेगा. तो अगर आपने किया नहीं रहेगा तो प्लीज डाउनलोड करो अभी MobaXterm. तो ये है सॉफ्टवेयर MobaXterm, डाउनलोड करो आपके सिस्टम में. बहुत ही लाइट वेट है, लाइट वेट सॉफ्टवेयर MobaXterm, राइट. ये देखो MobaXterm किया आपने, यू कैन से गेट पोर्टेबल एडिशन. पोर्टेबल एडिशन किया तो आपको एक फोल्डर ही आएगा ऐसा, जैसे अभी मेरे पास है. ये देखो MobaXterm अंडरस्कोर पोर्टेबल, ये वाला फोल्डर यू विल गेट. ये जिप फाइल मिलेगा आपको. दिस जिप फाइल यू विल गेट फ्रॉम दिस पोर्टेबल एडिशन, राइट. तो ये फाइल को अनजिप करो, बस. अनजिप किया तो समझ लेने का आपका MobaXterm इंस्टॉल हो गया, बिकॉज वी आर डायरेक्टली गेटिंग दिस exe फाइल. तो exe फाइल करके डबल करने का ऐसा भी नहीं है इधर. डायरेक्टली यू विल गेट दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, exe फाइल ही मिल जाएगा. ये करो. आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स. इंशा हो गया तो बता. सर पोर्टेबल एडिशन ना. पोर्टेबल एडिशन देखा मी दाखवलंय बघा. हे बघा ये वाला हाँ हाँ. ब्लू वाला पोर्टेबल एडिशन. तो आपको जिप फाइल मिलेगा. यस यस, डाउनलोड हो रहा है सर. बस वो जिप फाइल है ना, आपका जो AWS फोल्डर है अभी आपने जो बनाया रहेगा, जिधर आपका PEM का फाइल भी सेव भी क्या रहेगा ना, एक ही इसमें आप वो पोर्टेबल जो जिप फाइल है उधर
कॉपी करो एंड unzip that folder, so you will get these 4 things. ये मिला क्या मुझे बोलो. दिव्या मिळालं का तुला? इंशा? यस सर, बस डाउनलोड खत्म होने आए. हाँ, unzip करा and just you double click on it, so this software will get open. लोडिंग करके वो ओपन हो जाएगा. बस दिस इज व्हाट यू विल गेट. ऑलरेडी मेरे सेशंस मैंने करके रखे थे बिकॉज आई हैव ट्राइड ऑन इट. वी आर गोइंग टू ओपन इट न्यू वन. तो क्या करने का मैं आपको बताता हूँ. ये स्क्रीन आना चाहिए आपके पास. मोबाइल एक्सटर्म, जस्ट ओपन द स्क्रीन. So our steps reach up to this. You open the screen, right? उसके बाद मैं बोलता हूँ क्या करने का है. Follow me only, right? दिव्या and Insha, you give me the feedback. Feedback म्हणजे हे होतंय का नाही? तर माझं डाउनलोड व्हायला टाइम लागते, जरा टाइम घेईल. हा चालेल. इंशा तुझं काय झालं? सर 10 सेकंड्स में कंप्लीट होगा डाउनलोड. हा ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. झालं तर मला स्वतःहून सांगा का. हॅलो हॅलो. झालं सर. हा झालं ना. ठीक आहे. आता नाव सी once you open this, this is a fresh screen for you. We are going to open a new session. So start a remote session. ये स्टार्ट करो पहले. स्टार्ट झालंय. इंशा आ गया ये. यस सर. Okay, now here all of these are the the protocols through which we can able to connect to the AWS. So हम लोग यूज करेंगे SSH. So click on SSH. अभी देखो, अभी मैं बोलता हूँ वैसे ही फॉलो करो. रिमोट होस्ट के लिए मुझे AWS का ये जो इंस्टेंस है ना, DNS, ये मुझे इधर से कॉपी करने का है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक इट ओवर हियर. देखो, पब्लिक IP वर्जन 4 DNS कॉपीड. ये मेरे को कॉपी करने का है AWS से. हैव यू कॉपीड दिस? यस सर. ओके. What you to copy? ये दिस पब्लिक IP वर्जन 4 DNS एड्रेस. Okay sir. हाँ, दिस यू हैव टू कॉपी. हाँ, ये कॉपी करो इधर से एंड यू पेस्ट इट इन रिमोट होस्ट. करेक्ट. इंशा हो गया इधर तक? यस यस सर. नाउ हम लोग को यूजर नेम चाहिए. ओके, तो अभी ये यूजर नेम मिलेगा किधर से मालूम है? AWS में ही जाने का. वापस AWS में जाने का. आपका ऑलरेडी ये मशीन रनिंग है. एक्शन में जाने का. गो टू द एक्शन एंड क्लिक ऑन कनेक्ट. एंड यू कैन सी you have got the instances EC2 instance connect, session manager, SSH client and serial console. तो आपका SSH client जो है ना, टैब, वो क्लिक करो एंड नीचे ये वाला लाइन देखो. ये वाले लाइन पे दिया है Ubuntu is your यूजर नेम.
राइट. तो आई एम अगेन शोइंग दिस. क्या करने का है, गो टू द एक्शन मेनू, कनेक्ट पे जाओ एंड SSH क्लाइंट पे Ubuntu. सो दिस इज योर यूजर नेम. तो ये यूजर नेम कॉपी करो एंड इधर स्पेसिफाई यूजर नेम पे इधर डिफॉल्ट आएगा, उधर पेस्ट करो. ये करो पहला इधर तक. अभी तक ओके नहीं करने का, ओनली पहला दो ही थिंग मैंने बोला है. रिमोट होस्ट पे यू कॉपी द DNS एड्रेस एंड पेस्ट इट ओवर हियर. यूजर नेम पे जो आपका यूजर नेम रहेगा, तो अभी बाय डिफॉल्ट तो Ubuntu ही है बिकॉज ऑल ऑफ यू आर डन द सेम थिंग. लेकिन उधर जाके आप देखो कि भाई SSH क्लाइंट पे कह रहा मेरा यूजर नेम क्या है. So whatever username you get it, you paste it over here. Now next thing is go to the advanced SSH settings. आया इधर तक? Yes, sir. एडवांस SSH सेटिंग पे यूज प्राइवेट की के ऊपर क्लिक करो एंड ओवर हियर वो ब्राउज करके जो अपना ये था DevOps PEM फाइल जो आपने डाउनलोड किया था की वैल्यू पेयर का, ये फाइल हम लोग को अटैच करने देने का इधर. प्लीज डू दिस. In advanced SSH settings, go to the private key section and from here you browse the folders and through that folder you pick up that particular downloaded file and select it over here. इतना करने का है अभी तक, right? Okay? Select Yes, it. sir. हाँ, okay. Now after that you have to just say okay. तो देखो ये आपका लॉन्च स्टार्ट हो गया. ये देखो उसने फाइल पिकअप किया. ओके, आया इधर प्रॉम्प्ट आ गया आपको. ये डॉलर का Yes. प्रॉम्प्ट आया ना. हाँ, यस, वेरी गुड. तो नाउ यू कैन सी द IP एड्रेस विच यू हैव कनेक्टेड थ्रू योर SSH. वो कौन सा है? 172.31.38.163. करेक्ट. नाउ यू गो टू योर दिस थिंग इंस्टेंसेस. आपके इंस्टेंस पे जाओ जरा. इंस्टेंस पे सिलेक्ट यूर जो ये डिवाइस है एंड यू कैन चेक. सी दिस इज द प्राइवेट IP एड्रेस. इसको आप कनेक्ट हो गए. देखो इधर 172.31.38.163 172.31.38.163. उसका मतलब है वॉट एवर SSH you are using, you are now connected to the AWS instance. इथपर्यंत कळलं दिव्या? सर मी ते प्रायव्हेट की वर अटकले ते जरा प्रायव्हेट की त्याच्यात न्यू अच्छा अच्छा. सेशन. हा हा, न्यू सेशन मध्ये पण केलं ना सिलेक्ट. हा सर, तर ओपन केली ये ती फाईल जी आपण डाउनलोड केली होती हा, मग ते- त्यानंतर. ओके म्हणायचं, मग झालं मग तुझं काम. हा ठीक. ओके म्हटलं ना की ते सेशन लॉन्च होतं. आता माझी स्क्रीन मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना इंशा, वैसा वैसा तेरे इसमें आया क्या ये? हेलो हाँ इंशा. हाँ सर. हाँ यस सर, सर आया. झालं. हाँ, एंड यू कैन चेक दिस IP एड्रेस. ये देखो ये आपका IP एड्रेस और ये AWS का जो IP एड्रेस है ना, प्राइवेट IP एड्रेस, ये इंस्टेंस का, यू कैन चेक बोथ आर सिमिलर वन. दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड टू. Yes, sir, done. बस बस इधर तक झाला. आता पुढे जाऊया. ओके, राइट. आई थिंक बुकमार्क सेटिंग्स पण करावे लागले असते आपल्याला. बुकमार्क सेटिंग में आपको ये सेशन नेम भी दिखना चाहिए था, बट इट्स ओके नाउ. बुकमार्क सेटिंग फिर वापस चालू हो जाएगा ये सेशन. ठीक है, ऐसा फर्क तो पड़ने वाला नहीं है कुछ. एक्चुअली देर इज वन मोर थिंग. हेलो ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन. दिव्या, इधर है ना सेशन नेम भी इधर है. ये बुकमार्क सेटिंग है ना, वो भी हम लोग को करने का. देन वी हैव टू से क्रिएट ऐसा. सो ये डॉकर मशीन कैसा नाम है ना, सो नाम कौन सा भी रहने दो. अभी हम लोग का जो भी बाय डिफॉल्ट है वो आ जाएगा उधर, राइट. बट आफ्टर एडवांस सेटिंग यू हैव टू डू दैट. ओके, ये स्टेप ध्यान में रखो. अभी नहीं किया तो भी चलेगा. इधर तक समझ में आया ना? हा सर. हाँ, बुकमार्क सेटिंग लक्षात ठेवून द्या तुम्ही इंशाल्लाह. ये ध्यान में रखो. हाँ, ये तो ये वैसे ये फाइल मैंने तो दिया तो है आपको, लेकिन ओके. नेक्स्ट, नाउ यू गॉट दिस SSH. ओके, नाउ यू गो टू द सुपर यूजर, गिव द कमांड sudo su.
कमांड, प्लीज गिव द कमांड sudo su, सुपर यूजर पे जाने का आपको. तो फ्रॉम दिस डॉलर यू विल गेट लाइक दिस, यू नो, ubuntu/home/ubuntu, ऐसा आपको आएगा. ऐसा आपको आना ही चाहिए. ये आया क्या इधर तक? हाँ सर. Yes. हाँ Yes. सर. Okay, very good. Now after that you are going to actually get the docker. ये installation अभी आपका प्रोसेस चालू होगा docker से. Now for this what I did, ये docker hub, right, ये docker hub पे even though you can have the account of this hub.docker.com, इसमें अकाउंट बनाओ फटाक से. just open the account in hub.docker.com. सर है सबका अकाउंट. हाँ तो ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो ऑलरेडी है. सो नाउ यू कैन गिव दिस कमांड curl. I will write here, or I will write it in notepad. You know, notepad में लिखता हूँ so that you can see it in big font. ये कमांड आपको टाइप करने का है. curl, oh sorry, किधर गया ये, -fs/sl कैपिटल में है, fs स्मॉल में है और sl कैपिटल में है. https get.docker.com, get.docker.com, then -o get -docker.sh. ये कमांड आपको देने का है. ये कमांड में अपने इसमें भी डालता हूँ चैट बॉक्स में, ये वाला कमांड. नाउ जस्ट कॉपी द कमांड एंड ये सेशन पे आप डालो. जस्ट पुट इट ओवर देयर एंड just press enter. Now you will get nothing. That means what? Once you will give the command ls command किया ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि get.docker get-docker.sh, this file is now with you. ये कमांड से आपको क्या मिला है? ये get-docker.sh ये आपको मिला है फाइल, राइट. इसके पहले अगर आपने ls किया रहता था then you would have come to know कि ये फाइल आपके पास नहीं है. using this curl command, right, you will get this sh file. मिला इधर तक? हेलो. Yes sir. Yes sir. Okay, now here we are going to run the command. So for running the shell we have got sh space get-docker.sh. click enter and just wait for 1 minute. आपका नेट कनेक्शन अच्छा रहेगा तो फटाक से इंस्टॉल भी हो जाएगा. 1 मिनट में होता है वो. You will get this. हॅलो सर. Ah yes. सर मला ऍक्च्युली एरर येतो ते माझं ते स्टार्ट होत नाहीये ते. काय हे सेशन स्टार्ट होत नाहीये? हा सर बऱ्याच वेळा ट्राय मारतो आता. ट्राय करतो मी. अच्छा अच्छा अच्छा. 1-2 मिनिट थांब जरा. हे शेवटचं कंप्लीट करतो आणि नंतर आपण आपसी आपल्याला पूर्ण उद्याचा दिवस पण पूर्ण वेळ आहे, कळलं का नाही. तर सकाळचं लेक्चर प्लस दुपारचं प्रॅक्टिकल असं आपल्याला बराच वेळ आहे. आपण करूया 1 बाय 1. पहिले आता शेवटची स्टेप आहे ना ती कंप्लीट करतो आणि नंतर आपण तुझ्या प्रॉब्लेम कडे येऊया. हा दिव्या आणि इंशा तुमचं झालं काय? हो सर होत आहे. आय थिंक आता सिद्धांत बोलत होता का? हॅलो. येस सर. तेजस. हा सिद्धांत बोलत होता. तुझा प्रॉब्लेम होतोय का शेल मध्ये? नाही सर, तेजस बोलतोय. तेजस हा तेच बोलतोय सर, मी तेच बोलतोय. अच्छा अच्छा. हा हे बघ, नाव दिस इज आता मी तुमच्यासमोर आता हे पण केलं. आता नाव आय गॉट दिस डॉकर. सो डॉकर इज विथ मी. आता सपोज आय वॉन्ट टू चेक विदर डॉकर हॅज इन्स्टॉल विथ और नो. सो वी नो व्हॉट इज द कमांड docker-version. बस ही कमांड तुम्ही टाकली and you will get something like this, right? Yes sir. docker_version आलं पाहिजे.
माझ्या हिशोबाने डॉकर असं येते, क्लिअर करतो स्क्रीन. डॉकर -हायफन वर्जन आहे. Docker -hyphen version. Now you will get this Docker version. See, Docker version 20.10.8. इसका मतलब है इंस्टॉलेशन ऑफ डॉकर इज सक्सेसफुल. इधर तक आ गया. इतना आला इनसे इधर तक आया आपका. यस यस सर. ओके. तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ना, अवर फर्स्ट पार्ट इज दिस, दैट इंस्टॉलेशन ऑफ डॉकर. ये वाला पार्ट अभी हो गया, पूरा हो गया. तो इसके लिए ये पूरा स्टेप्स दिया है. आपको क्या करने का है, आपको ये जो स्टेप्स है ना ऑलरेडी आपने किया है, बराबर है. तो ये स्टेप्स एज इट इज लिखने का है. खाली आपने जो इंस्टेंस का नाम दिया था, ये किया था ना, तो दिस फाइल यू आर गोइंग टू एडिट. ये पीडीएफ फाइल में देता हूं आपको. पीडीएफ फाइल का डॉक फाइल बनाओ. डॉक फाइल से आपको जो भी आपका जो नाम रहेगा, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. इफ यू वांट टू डू इट, इफ यू वांट टू डू इट वंस अगेन, यू कैन डू इट. अदरवाइज ऑलरेडी आपने प्रैक्टिकल आपका हो गया है. तो अभी आप जो मैंने स्टेप्स लिखा है वही वैसा का वैसा है. खाली आपने अभी देखो इधर सिक्योरिटी ग्रुप का नाम आपने आपका दिया रहेगा, तो वो रिप्लेस करो. की पेयर का नाम आपने जो दिया रहेगा वो रिप्लेस करो, बस. एंड सेव दिस फाइल एंड अगेन क्रिएट ए पीडीएफ फाइल, और अपने एक्सपेरिमेंट में आपको अपलोड करने का है. लेकिन बिफोर अपलोडिंग दिस, हम लोग का ये आधा छोटा सा पार्ट बाकी है. एग्जीक्यूट डॉकर कमांड्स टू मैनेज इमेजेस एंड इंटरेक्ट विद द कंटेनर. अब ये कंटेनर कैसे बनाने का, डॉकर कमांड कैसे चलाने का, दैट पार्ट वी विल सी इट टुमारो मॉर्निंग, राइट. तो ये वाला जो पार्ट है, दैट पार्ट आल्सो ऑलरेडी आई हैव गिवन इट टू यू. देयर आर लॉट ऑफ डॉकर कमांड्स. डॉकर कमांड कैसे देने का और कैसे इमेज बनाने का, MySQL रो, HTTPD रो, whatever images you can able to do it. How to open the container, कंटेनर कैसे ओपन करने का, वो देखने का कैसे है कि कौन सा कंटेनर है, कंटेनर आईडी कैसे जनरेट होता है, राइट. ऑल दिस थिंग्स दैट वी विल डू इट टुमारो मॉर्निंग. हाँ यस, कौन बोलता है? हेलो दिव्या, इज इट करेक्ट? हॅलो हॅलो सर, ते मी बोलून माझा ते प्रॉब्लेम येतो सर. हा तेजस, तुझं शेअर कर ना, स्क्रीन शेअर कर ना पटकन. हा एक मिनिट. हा चालेल. एंड बिसाइड्स दैट दिव्या, इज इट ओवर? हैव यू इंस्टॉल्ड द डॉकर? यस सर. सी, हम लोग जो कर रहे हैं ना, ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ AWS. नाउ हमारे पास हमारे पीसी पे ना कोई जीबी रैम है, ना उधर कोई हम लोग ने डॉकर इंस्टॉल किया है, ना उसके ऊपर किया है. वी आर एवरीथिंग वी आर डूइंग इट एट द क्लाउड साइड. पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्लाउड में यूज कर रहे हैं. एंड वी आर जस्ट यूजिंग द ब्राउजर टू कनेक्ट विद द AWS, एंड वी आर यूजिंग दिस मोबा एक्सटर्म टू कनेक्ट टू द AWS ओनली. तो उधर ही हम लोग डॉकर इंस्टॉल कर रहे हैं. हाँ यस, बोल. सर ते इन्स्टन्स, एक मिनिट प्लीज, ते इन्स्टन्स रनिंग स्टेटस मध्ये राहू दे उद्यापर्यंत. मग हे नाही स्टॉप लॉग इन काय करू इकडे? लॉग इन नाही बघ, आता इकडे आला ना, तर माझे कसे इकडे ऑलरेडी सुरुवातीला डॉकर मशीन वर दिसत होते ना, तसं तुमचं पण इकडे हे दिसेल, सेशन नेम. स्टॉप करून टाकू का सर मग? हा ते आता स्टॉप करायचा ना, काही प्रॉब्लेम नाही. इकडे डायरेक्ट क्लोज केले चालेल, बंद केले चालेल, असं काहीच नाहीये. म्हणजे तसं त्याच्यामध्ये काय हे नाही. यू आर गोइंग टू क्लोज इट, चालेल, तसंही क्लोज करा, काही प्रॉब्लेम नाही. बघा आता. हा काय म्हणतो? नाही सर, आता सेशन नवीन मध्ये एसएसएस केलं होतं नवीन. नाही नवीन केलं तर परत सगळं नवीन करावं लागेल तुम्हाला. सगळं ते कॉपी पेस्ट. हा बरोबर, हे कॉपी करायचं. अरे कॉपी केलं, पण आता इकडे एंटर केलं. हा अरे ओके नाही करायचं राजा? हा ओके नाही करायचं? नाही म्हणून तसं प्रॉब्लेमच असेल. बघ जरा, नवीन सेशन ओपन कर. न्यू सेशन. हा बघ, SSH कर. हा पहिले पेस्ट कर. चल. हा आता इकडे युजर नेम मला जा. युजर नेम स्पेसिफाय, युजर नेम तिकडे युबुंटू ली. युबुंटूच केलंय ना तू? हा उबुंटूच केलं. हा ऍडव्हान्स SSH मध्ये जा. हा इकडे काय करणार, इकडे तो यूज प्रायव्हेट की क्लिक कर. यूज प्रायव्हेट की. हा आणि ब्राउज करून ती फाईल. ही नाही पीएम नाही. हा PM फाईल. जा ना तिकडे, जा ना त्या मोबॅक्स मध्ये जा ना. हा इकडे ब्राउजला बटन आहे बघ बाजूला, ब्ल्यू कलरचं बटन आहे ना. हा क्लिक कर. हा आता सिलेक्ट कर ती फाईल तुझी. तू PM फाईल कुठे ठेवली आहे तुझी?
ती वरती गेली का PM फाईल? सर एक मिनिट. आता हा, मी delete केली नाही. होती. हा ही आहे बा, हा करेक्ट ओके. आता हे झालं, थांब अजून ओके नको बोलू. बुकमार्क सेटिंग मध्ये जा, बुकमार्क सेटिंग. हा, आता इकडे सेशन नेम लिही तुझं, डॉकर हायफन न्यू मशीन लिही, काही लिही, डॉकर हायफन, हे फक्त आपली स्टेप करायची राहिली, डॉकर अंडरस्कोर हे हायफन मशीन. हा, ते सेशन म्हणजे आपल्याला ह्युमन बिंगला कळण्यासाठी. ओके म्हण, आता ओके म्हण, नाव यू क्लिक ओके. आता होणार बघ, हे बघ झालं. हा बस, आता ती LS आता तू स्युडो सू कर, स्युडो स्पेस सू सुपर युजर आहे बा, आला युबुंटू मध्ये. नाव हिअर व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू से LS, जस्ट राईट LS, एंटर. सी LS मध्ये काहीच नाही ना फाईल. आता तू ती कल कमांड आहे ना, कल वाली, ती कमांड कॉपी पेस्ट कर. हा पेस्ट, बरोबर आहे, पेस्ट असंच येतं, पेस्ट कर, एंटर. झालं, LS कर. ओके, आता SH कर, SH स्पेस, SH येत नाही, SH फक्त SH स्पेस शेल येते. गेट GET आणि टॅब मार सरळ, गेट नंतर टॅब मार. नाही टॅब SH. हा बस, एंटर. बस, आता झालं तुझं, डॉकर इन्स्टॉल होईल. डॉकर इन्स्टॉल झालं तुझं की तुला परत प्रॉम्प्ट येईल. प्रॉम्प्ट आला की काय म्हणणार, डॉकर हायफन व्हर्जन. कळलं, म्हणजे इथपर्यंत आपण केलंय. ओके, होणार नाही, हे होणार. दिस इज इन्स्टॉलेशन चालू आहे. कळलं, 1 मिनिट लागतो त्याला, पटकन नाही होणार. सर AWS मध्ये इन्स्टॉल होतं ना. हा, सगळं क्लाउड वरती इन्स्टॉल होणार. आपल्या मशीन मध्ये आपण काहीच नाही करणार. एव्हरीथिंग वी आर युझिंग द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ AWS. सर मग डॉकर डेस्कटॉप अनइन्स्टॉल केलं तर चालेल ना? डॉकर डेस्कटॉप ना, आता अरे अनइन्स्टॉल काय, आपण इन्स्टॉल पण नाही केलंय. दिस इज जस्ट EXE फाईल आहे, प्रोटोकॉल आहे हा फक्त, बघा बस. दिस इज हॅव यू इन्स्टॉल दिस. आपण EXE फाईल फक्त डबल क्लिक करून ओपन केली, ती लोड केली फक्त फाईल. कळलं का दिव्या? हा सर, कळलं. एकदम लाईट वेट आहे, फक्त लोडिंग केलेलं आपण फाईलचं. वी आर नॉट इन्स्टॉल दिस. आणि उद्या आपल्याला अजून मजा येईल. म्हणजे उद्या वन्स यू विल डू स्टार्ट विथ दी अदर कमांड्स ऑफ डॉकर अँड दिस थिंग ना, देन यू विल गेट दॅट. ते पूर्ण झालं ना, देन अवर एक्सपेरिमेंट इज ओव्हर. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अँड सेकंड एक्सपेरिमेंट थोडंसं इट विल टेक लेस टाइम, तर आपलं लगेच होऊन जाणार. म्हणजे त्याला काय टेन्शन नाही, म्हणजे उद्यापर्यंत पण आपलं होऊन जाणार सगळं. दोन्ही एक्सपेरिमेंट होतील, म्हणजे डॉकरचं पूर्णपणे काम होऊन जाणार. हे बघ झालं. आता टाईप कर, डॉकर स्पेस हायफन व्हर्जन. ओके, म्हणजे इन्स्टॉलेशन ऑफ डॉकर तुझं कम्प्लीट झालं. आता फर्स्ट पार्ट इज ओव्हर. एक्सपेरिमेंट नंबर 3चा 4th फर्स्ट पार्ट इज ओव्हर. आता सेकंड पार्ट आहे ना, तो आपण उद्या करू. सेम आपल्याला इकडनं फक्त सेशन ओपन करायचंय. त्याच्यामुळे आता डायरेक्टली तू इकडनं सेशन क्लोज कर, डायरेक्टली क्लोज कर, कसंही तुमच्या मर्जीवरती. ओके, इकडून क्लोज केलं तर मग तिकडे क्लोज होणार ना? नाही, वरतून नाही, वरती तर तुझा AWS चालूच आहे ना. कंटिन्युअस सर्व्हिस तुझं रनिंग. तू रनिंग मध्ये बघ ना, सुरुवातीला मी बोललो ना, माझं पण तुला दाखवलं बघ, रनिंग आहे ना. ते तुझं चालूच आहे ना. रनिंग हे बघ, टर्मिनेट करावं लागेल ना पण सर नंतर. नाही, इट इज, मी ते सांगतो की हे तू कंटिन्युअस पण किती पण वेळ चालू शकतो ना. इट इज अप टू यू. तुला 1 वर्षभर दिलाय, तू 1 वर्षभर चालू कर ना. तुला थोडी तो चार्ज घेणार आहे. फ्री आहे म्हणून आपल्याला आपण ते R&D नंतर करू शकतो. कळलं का नाही? हा सर. हा, मग आता पुरतं हे राहून दे, असं काही फरक नाही पडत. डायरेक्टली यू कॅन लॉग आउट, इकडनं पण लॉग आउट करू शकतात तुम्ही. ठीक आहे, यू कॅन गिव्ह द कमांड एक्झिट कमांड देऊ शकतात. एक्झिट कमांड दिले तर यू विल हॅव द अगेन प्रॉम्प्ट मध्ये याल. हा, ते सर सुपर युजर म्हणत होते त्याच्यामुळे. हा, मग झालं. डायरेक्टली तू यू कॅन क्लोज द सेशन क्लोज करा. तो तसंही तुम्हाला विचारतो बघा, डायरेक्टली क्लोज केलं की इट विल आस्क यू टर्मिनल 2 ते बंद करायला का, है ना. इकडे नाही, लास्ट शेवटला वरचं क्रॉस. हा, क्रॉस कर बस. हा, तू आता पहिल्यांदा ते बंद केलेलं म्हणून विचारलं नाही, पण इट विल आस्क यू. एक रुपये लॉग आउट करून टाकलं सर. काय म्हणतो?
इकडून पण लॉग आउट करून टाकलं AWS. हा पण तो AWS च कनेक्शन आहे ना ते SSH आपण हा. डायरेक्टली वी आर कनेक्टेड टू दॅट ओनली ना. हा सर. ओके चला मग Okay. आतापर्यंत बाद झालं. आता ऑलरेडी 3:10 झाले. ओके नाव यू कॅन लिव्ह अँड टुमॉरो मॉर्निंग वी विल प्लीज ट्राय टू सॉल्व क्विज 2. हॅलो. हा तेजस बोल.